Hello everyone. Today I bring a new chapter, Respiration in Plants. It have 22 questions which we will be solved, which are coming in the previous year paper from 2013 to 2023. So it is very much important. So let's start. Question number 1. Matching. Match list with 1. Oxidative decarboxylation, glycolysis, oxidative phosphorylation, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. लिस्टों में दिया गया है सिट्रेट सिंथेटेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईएमपी पाथवे. सो मैचिंग करने पहले उसके बाद मिलाएंगे. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इट गोज टू पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. ग्लाइकोलाइसिस EMP pathway, oxidative photophosphorylation, electron transport system, and tricarboxylic acid cycle, it goes to citrate synthetase. So here 2 4 3 1 2 4 3 1, which one is the one correct one? Now option A is your answer. Okay, explanation. Pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol after it enters mitochondrial matrix, undergoes oxidative decarboxylation by a complex set of reactions catalyzed by pyruvate dehydrogenase. So option A is the correct one. Next question number 2. Which of the following combinations is required for chemiosmosis? Option A, membrane, proton pump, proton gradient, NADP synthetase. Option B, proton pump, electron gradient, ATP synthetase. Option C, proton pump, electron gradient, NADP synthetase, and NADIP synthetase. And fourth is membrane, proton pump, proton gradient, ATP synthetase. So here option number D is the correct one. These combinations are required for chemiosmosis: membrane, proton pump, proton gradient, ATP synthetase. Next question 2023 का. Malonate inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of. Malonate inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of. Option A, amylase. Option B, lipase. Option C, dinitrogenase. And option D, succinic dehydrogenase. So here your answer is option number D, succinic dehydrogenase. Explanation. Malonate is known as the inhibitor of the enzyme succinic dehydrogenase, which is involved in the citric acid cycle, also known as Krebs cycle or TCA cycle, an essential metabolic pathway in many organisms including bacteria. So option D is your correct answer. Next question number 4. How many times decarboxylation occur during each TCA cycle? कितनी बार होता है ये decarboxylation? So thrice, many, once, twice. Here the answer is option number D, twice. The TCA cycle, also known as citric acid cycle or Krebs cycle, involves the oxidative decarboxylation of malate to oxaloacetate and isocitrate to alpha ketoglutarate. However, the latter reaction is followed by another decarboxylation when alpha ketoglutarate is converted into succinyl coenzyme A. So in total there are 2 decarboxylation reactions per TCA cycle. Okay, so option D is the correct one. Now question 5. Fatty acids are connected with the respiratory pathway through dash. Fatty acids are connected to the respiratory pathway through acetyl coenzyme A. Option A. So here correct answer is option number A, acetyl coenzyme A. Question number 6. The number of times decarboxylation of isocitrate occur during single TCA cycle is. The number of times decarboxylation of isocitrate occur during single TCA cycle is option A 4, 1, 2, 3. क्या होगा आंसर यहाँ पर? Here option C, 2 is the answer. During TCA cycle, 6 carbon compound isocitrate is converted into succinyl coenzyme A, a 4 carbon compound, by removing 2 CO2 molecules. Okay, so here 2 is the answer. Next question 2022 का है ये. What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। कितना अमाउंट का एटीपी प्रोड्यूस होता है? देखो 4 6 2 8। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस total 4 ATP are produced from one glucose molecule with a net gain of 2 ATPs. So here option C 2 is the answer. Okay, next question number 8. What amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितना अमाउंट का ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है? अप्रोक्सीमेटली 15%, मोर देन 18%, अबाउट 10%, लेस देन 7%। अब यहाँ पर क्या होगा आंसर? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, लेस देन 7%। ओके, लेस देन 7% of energy in glucose is released during lactic acid fermentation and not all of it is trapped as high energy bonds of ATP. Okay, so option D is the answer. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। 2021 का सवाल है ये। स्टेटमेंट इनकरेक्ट बतानी है आपको। ABCD दिया गया, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? पहला, इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस गिव्स राइज टू 2 ATP ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड 1 FADH2 गिव्स राइज टू 3 ATP ऑफ मॉलिक्यूल्स। B, ATP synthesized through complex B. C, oxidation reactions produce proton gradient in respiration. And option D is during aerobic respiration role of oxygen is limited to the terminal stage. So here the answer is incorrect ढूंढना है और पहला वाला ही incorrect है। कहाँ गलती हुआ यहाँ पर देखो, explanation, oxidation of one molecule of NADH gives rise to 3 molecules of ATP। यहाँ पर 2 दिया गया है। Okay, so 3 molecules of ATP and that 1 molecule of FADH to produce 2 molecule of ATP। तो यहाँ पर नंबर में ATP के नंबर में गलत कर दिया गया, इसीलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। बाकी सबके सब क्या है? करेक्ट है, तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होगा? 1 2 3 0। नाउ हियर द आंसर इज ऑप्शन ए 1. The number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle is 1. Okay. Next question number 11. Pyruvate dehydrogenase activity during aerobic respiration requires iron, cobalt, magnesium, calcium. किसकी रिक्वायरमेंट करता है ये? ना हियर 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। मैग्नीशियम विल बी योर आंसर। Pyruvate, which is formed by glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol after it enters mitochondrial matrix, undergoes oxidative decarboxylation by complex set of reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase. The reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase requires the participation of magnesium ion. So here option C, magnesium will be the correct one. Next question 2019 का है ये। देखो, respiratory quotient RQ value of ट्राइपाल्मिटिन इज। ट्राइपाल्मिटिन क्या होता है? एक फैटी एसिड है, तो इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है? ना 12 का क्या होगा आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन बी 0.7%। अब आरक्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ना अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे अमाउंट डाल के, फॉर्मूला लगा के, तो क्या आ जाएगा? 0.7 हमारे पास आएगा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैटलाइज्ड बाय। कौन करता है इसे? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का, इज कैटलाइज्ड बाय। क्या होगा आंसर? ना आंसर विल बी ऑप्शन बी, एक्सोकाइनेज। Hexokinase catalyzes the conversion of glucose to glucose 6 phosphate. It is the first step of activation phase of glycolysis. So B will be the answer. Next is question number 14. What is the role of NAD plus in cellular respiration? NAD plus का रोल क्या है? ऑप्शन ए, it forms as an enzyme. ऑप्शन बी, it functions as an electron carrier. ऑप्शन सी, it is a nucleotide source for ATP synthesis. And option D is it is a final electron acceptor for anaerobic respiration.
So here your answer is option number B. It functions as an electron carrier. Okay. Explanation. NAD plus is an oxidizing agent that accepts the electrons from other molecules and becomes reduced to form NADH. NADH then can be used to donate electrons. In this way, NAD plus acts as an electron carrier. Question number 15. Which of this statement is incorrect? देखो पहला, एंजाइम्स ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल. ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन साइटोसोल, ये भी ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विथ एनएडी दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स, ये भी करेक्ट है. लास्ट वन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इनर होना चाहिए था यहाँ पर. ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन takes place in the inner mitochondrial membrane, not in the outer mitochondrial membrane, which is given in this statement. That's why option D statement is the incorrect one. Next, question number 16. Which statement is wrong for Krebs cycle? First one, there are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus. तो ये आपका करेक्ट है, 3 जगह पर होता है ये. B, there is 1 point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2. एक बार होता है ये FAD से FADH2 बनता है. Option C, during conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. बिल्कुल GTP प्रोड्यूस होता है. And option D is the cycle starts with condensation of acetyl group acetyl coenzyme A with pyruvic acid to yield citric acid. ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया क्रेब्स साइकिल में. क्यों रॉन्ग हुआ, एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना. क्रेब्स साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, टू फॉर्म सिट्रिक एसिड. यहाँ पर इसने पायरुविक एसिड दे दिया, इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो गया. ओके, और एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, दोनों मिलकर बनाते हैं सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड. ओके, सो डी इज द रॉन्ग वन. क्वेश्चन नंबर 17. Which the following value will depict the correct respiratory quiescent when tripalmitin fatty acid is used as a respiratory substrate? कितना होगा, सेम अमाउंट कैलकुलेशन करना है आपको. रेस्पिरेटरी क्विसेंट का फॉर्मूला डाल लगा के, तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 0.7 आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज क्या होता है ये, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी, क्या ये होता है, गलत. फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, ये करेक्ट है. ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ए सबस्ट्रेट टू एडीपी, गलत. ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी, ये भी गलत. सो बी विल बी योर आंसर. एक्सप्लेनेशन, unlike photophosphorylation where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation, in respiration it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. It is for this reason that this process is called oxidative phosphorylation. So option B is your answer. Question number 19. Which the following biomolecule is common to respiration medicated breakdown of fat, carbohydrates and proteins? कौन सा बायोमोलिक्यूल मोस्टली कॉमन होता है इन तीनों में? सो क्या होगा, क्या वो पायरुविक एसिड है, क्या एसिटाइल कोएंजाइम है, क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट? हियर योर आंसर इज ऑप्शन बी, एसिटाइल कोएंजाइम ए. एसिटाइल कोएंजाइम इज कॉमन इन रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. साइटोक्रोम आर फाउंड इन, साइटोक्रोम्स कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. हियर योर आंसर इज ऑप्शन ए, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Explanation, the inner mitochondrial membrane forms a number of enfoldings called the cristae towards the matrix. Inner mitochondrial membrane is the site of electron transport chain in which the cytochrome are arranged.
सो हियर योर आंसर इज द क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और क्रिस्टे की जगह अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता तो भी आंसर सही होता। 22. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। लैक्टेट फॉर्मेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट, एरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जब लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है, लैक्टेट फॉर्मेशन इज द टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच द respiratory substrate is converted into lactate along with the production of ATP. It takes place in the muscles during the high physical work. Vigorous physical work करने पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, और यहाँ पर कोई CO2 रिलीज नहीं होता। जबकि ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा तो CO2 भी रिलीज नहीं हो रहा। क्लियर? ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट 22, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। द 3 बॉक्सेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द 3 मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरो रिप्रेजेंट्स नेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एरो नंबर 4, 8 and 12 कैन ऑल बी। एरो नंबर 4 यहां पर है, 8 and 12, ये तीनों मिला के क्या मतलब रिलीज क्या होता है इनमें से? क्या वो FAD प्लस और FADH2, क्या वो NADH है, क्या वो ATP है, क्या वो H2O है? सो हियर योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ATP। पाथवे ए क्या है आपका? देखो ग्लूकोज एंट्री कर रहा है, सेल के अंदर एंट्री किया ग्लूकोज, और साइटोप्लाज्म में हो गया ग्लाइकोलाइसिस। एंड पाथ बी क्या है? पाथ बी इज योर क्रेब्स साइकिल। पाथ बी इज योर क्रेब्स साइकिल। ATP is generated at substrate level in glycolysis and Krebs cycle. ओके, सो इस तरह से हमने ये चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। टोटल 22 क्वेश्चंस थे, और आई होप ये आपको हेल्पफुल करेगा नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर भी हम जल्दी लेके आ जाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहना अच्छी तरह से। जय जगन्नाथ।